Hey guys, hi, welcome to Unacademy. Let's Crack Foundation NTSE channel. I hope all of you are doing really good. Sorry for this very lethargic. Okay, sorry. Yeah, sorry for this lethargic voice. I'm not really well, so I'm trying to, not excite my nervous system a lot. So I'm just trying to play it cool. Good evening, everyone. Welcome to Unacademy, Respect Foundation NTSE channel, and I hope you people are having a wonderful festival time. I hope आपका festival काफी मजेदार चल रहा है and if it is going a bit too much मजेदार मैं आपको याद दिला दूं एग्जाम है तो मजे करो but ज़्यादा मजे मत करना ठीक है so guys welcome once again and let us get started. Today we are going to try to have mixed questions cell chapter से लेके natural resources तक ठीक है तो टेक्निकली स्पीकिंग हमने पूरा सिलेबस खत्म कर लिया है राइट ओके या so that is why what we are going to do is we are going to try to bridge the path now. So remember अब revision sessions start हो चुके हैं right. So 8 बजे रात को जो live classes होते हैं बेटा Wednesday and Saturday is reserved for NTC stage 2. Tuesday, Thursdays and Fridays is for IOQJS starting October 19th. Special classes 6, 3 and 6 plus classes 4:30. If you need to connect with me for any doubts, Sona Singh Unacademy, that is my telegram. Okay? And very importantly, you can track all of the lectures. कई लोग हमेशा पूछते हैं sir how to get the information about the lectures. So guys, you can track all the lectures, right? How you can do that by the tracker. So this is आप ट्रैकर खोलोगे तो आपको ये दिख जाएगा ठीक है एनटीएससी स्टेज 2 का सारे जो है हर वीक अपडेट हो जाएंगे तो कल ये दोनों हो गया था ये भी अपडेट हो जाएगा एंड उसी तरह यू विल हैव सिमिलरली फॉर IOQJS का भी लिंक्स यहाँ पे अपडेट होते रहेंगे ठीक है सो आपको पूरा प्लान सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है राइट नाउ लेट अस क्विकली स्टार्ट विथ क्वेश्चंस ठीक है अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस एनी लॉजिस्टिक्स इफ यू वांट टू आस्क समथिंग गो है अगर आपको कुछ पूछना है तो अभी आप पूछ सकते हो अगर नहीं पूछना है फिर वी विल जंप टू द क्वेश्चंस गाइस. Whenever the code is flashing on the top of the screen, guys, the code is flashing on the top of the screen. Make sure आप ये code अपने सारे friends को share कर दें, right? So, hi Shreya, good evening. A long time, yeah. Shravan is here, Abhishek, and some Taj Gaming. Start, Menti. At its own time, but yes, guys, come on, quickly. फटाफट join the Menti. The code is right now flashing on words, है ना? ये कोड अब यहाँ पे बड़ा बड़ा भी फ्लैश कर रहा है थैंक यू सो मच श्रेया कम ऑन गाइस कम ऑन फटाफट देयर जस्ट 11 क्वेश्चंस एक्चुअली 12 तो फटाफट आधे घंटे में 12 क्वेश्चंस कोशिश करेंगे खत्म करने का राइट सॉरी फॉर माय स्नॉट्स एंड स्टफ बट unfortunately you have to bear with them. The purpose of cell wall cell chapter से एक क्वेश्चन है सेल वॉल का पर्पस क्या है to stop solutes, to stop the DNA, to provide rigidity, to prevent the entry of water. So you already have been taught, आपको already पढ़ाया जा चुका है each part of the cell और हर एक part का function. तो सीधा सीधा सवाल पूछ लिया गया है कि भैया सेल वॉल का पर्पस क्या है वेरी गुड एंड आई एम वेरी हैप्पी सभी लोगों ने सही आंसर दिया सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल यानी वो डीएनए सॉल्यूट या पानी को नहीं रोक सकता द ओनली थिंग इज इट डज इज प्रोवाइड्स सम सॉर्ट ऑफ रिजिडिटी तो जब पानी का अंदर एंट्री होगा तो आपके प्लांट सेल्स दे विल लाइक स्वेल जैसे फुटबॉल में हवा भरने से फूल जाता है वैसे ही तो आपके सेल वॉल होने की वजह से because we have a cell wall that is the whole reason that the cells do not burst ठीक है बड़ा simple question था moving on to the next one there's a leaderboard after okay चलो moving on to the second question बेटा the tissue with multiple nuclei would be इसमें से कौन सा टिश्यू है जो multiple nucleated condition में पाया जाता है squamous epithelium skeletal muscle a neuron or a red blood cell
Once again, a very simple question. Come on, beta. So yes, it is a skeletal muscle fiber, beta. Skeletal muscle fibers may have multi-nucleated conditions. Squamous epithelium में कभी भी multiple nuclei नहीं होते. They just have one. Formed by syncytium. Yes, उस cell को we can say it's a syncytium because they are formed by fusion reactions. Not fusion actually. It's like they divide multiple times, but cytokinesis नहीं हुआ. Hi Samyak, long time no see. Yeah, I know you people have exams and everything, but कोई बात नहीं. ठीक है. चलो, so that was a question from tissue. Let us move towards a question from diversity. Guys, अब जो है आपको questions के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलता. 20 to 25 seconds should be enough क्योंकि आप ये सारे questions किसी ना किसी फॉर्मेट में प्रैक्टिस कर चुके हो, राइट? Pteridophytes key innovative feature was Pteridophytes का major innovative feature क्या था that provided it with the success, right? Pteridophytes के जंगल हुआ करते थे. Very good. So we have Thallophyta, which is just thalloid, यानी collection of cells. Then you have Bryophyta, leaf-like rhizoids and then stem-like features, ताकि ज़्यादा differentiation, ज़्यादा specialization हो पाए. Next was the vascular element, जिससे conduction improve हो गया. So now so-called roots water को conduct करके ऊपर भेज सकते थे और so-called leaves ऊपर photosynthesis करके नीचे root को जिंदा रखने के लिए खाना भेज सकते थे. And this is the reason that bryophytes तक you did not have extremely tall plants. The average height was just 15 to 30 centimeter. Maximum height was I guess 60 centimeters. But pteridophytes were the first ones to form a full-fledged jungle. ठीक है, सबसे पहले इन लोगों ने ही जंगल बनाया था. And obviously after that already happened. So ये NTSE questions no beta, these are just generic questions. These are not from NTSE. ये NTSE previous year question नहीं है, just mixed bag of questions beta. Why is my iPad sort of reacting on its own? I don't know. So moving towards the next question. Question 4 of 11. Which of the following would be a viral disease? बहुत ही simple question है. Why do we fall chapter से? इसमें से कौन सा ऐसा डिजीज है जो एक वायरल फॉर्म का है? वायरल फॉर्म मीनिंग यू नो malaria, you already know the causative agent, right? Plasmodium, AIDS, that is HIV virus. Okay, I should not have said that. Elephantiasis, Wucheria bancrofti, common cold, once again the virus. And syphilis is Treponema pallidum, right? Common cold again is caused by a virus. AIDS is also guys, my fault. My fault. I will delete the results for these questions. The question was supposed to be bacterial and the answer was supposed to be syphilis, treponema pallidum. My fault. I'll change this. Don't worry about the marks. I'll change this. Yeah. So the answer is both B and D, obviously. But the question was supposed to be syphilis. It was supposed to be about a bacteria. But sometimes nose takes over the brain. Conservation of forests is important to which of the following? Conservation of forest इनमें से किसके लिए important है? गवर्नमेंट के लिए, इंडस्ट्री के लिए, naturalists के लिए, ट्राइबल के लिए, या all of these? Are they important to all of these? So हम stakeholders के बारे में पढ़ते हैं. We talk about the stakeholders of forest, right? So yes, it's important for all of these because अगर conserve नहीं होगा तो governments they have to make sure that there is good quality of air. And how does good quality of air and wildlife comes from? It comes when the forests are conserved, right? Because these forests are oxygen generators. वो आपके एनवायरनमेंट में कार्बन को रिड्यूस कर रहे हैं, ऑक्सीजन जनरेट कर रहे हैं. कार्बन को रिड्यूस करने का मतलब दे आर मेंटेनिंग द टेम्परेचर एज वेल, दे आर लिमिटिंग the global warming as well. So that is why it's important for government. Why it's important for industry? अगर industry ने excessive use कर लिया, there wouldn't be anything left, right? So at the end of the day, in a longer run, even the industry wants the forest to be
saved. But obviously, shorter greed sometimes overtakes the longer gains. Naturalists are people who just love forest and wildlife and they want to preserve it. And tribal people, obviously, because they are dependent on the forest for their day-to-day activities. Right. So only 11 questions. Beta, the reason is I am really not in a condition to take a longer 1 hour class. That is why 11 questions only. It's just my nose. Once again, my nose. So it's because of the nose, chota. Okay, question 6 of 11. Short session, only 30 minutes or something. Ocean currents are dashed due to temperature. Ocean currents increase होते हैं, decrease होते हैं due to increased temperature or decreased temperature. So, do they work slowly? Do they work fastly because of increased temperature or because of decreased temperature? Now, when I see temperature, I'm talking about the global temperature here. मैं global temperature की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो कंफ्यूज मत होना एंड गाइस डू रिमेंबर टू लाइक द सेशन एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स इस सेशन को लाइक तो जरूर करो एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स ठीक है बिकॉज सेशन इज रियली है okay so guys ocean currents they are being slowed they are not being sped up they are being slowed down why अभी जो ओशन करंट का ड्राइवर्स है व्हाट आर द ड्राइवर्स ऑफ ओशन करंट द टेम्परेचर डिफरेंसेस राइट सो इक्वेटर्स आर हॉट एंड पोल्स आर कोल्ड बट व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर रेजिंग द ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने की वजह से द पोल्स आर बिकमिंग less and less cold why because the ice is melting and because of that जो temperature gap था वो अब घटते जा रहा है and because of the increased temperature the temperature difference is decreasing and because of the decreased temperature difference the ocean currents are currently being slowed down right so the correct answer was that now guys before moving ahead I'll quickly just jump towards what is plus and what are iconic subscriptions I hope you don't mind so what is Plus and Iconic? But they are subscriptions जिससे आपको Unacademy के platform का maximum benefit मिलता है. Do not worry, there are special classes which are completely free of cost. But with the help of Plus and Iconic, you get to be a part of a full-fledged course. That means top indicators, doubt clearing sessions, live test, mock series, पूरा का पूरा syllabus in your own choice of language and obviously you don't have to go anywhere कहीं जाने आने में कोई समय बर्बादी नहीं होती there's a lot of courses available जैसे NTSE Stage 1 का जो course launch हुआ था that is about to end on 31st of October but we have a new course सारथी सारथी टर्म 1 के टॉपिक्स को NTSE लेवल तक लेके जाएगा तो इससे आपका बोर्ड्स और आपका NTSE दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होता है राइट नाउ गाइस देयर इज आल्सो a similar course for grade 9 जिसको हमने तूफान कहा right so guys Sarthi and Tufan are amazing courses that is available for you how do you get subscription of these courses go for the category फिर choose बड़ा महीना क्योंकि उससे पर मंथ प्राइसिंग आपकी घट जाएगी ठीक है एड द कोड Sona05 ऐड करते ही इंस्टेंटली 10% डिस्काउंट भी आपको मिल जाता है गाइस इसी तरह you have iconic as well जिसमें प्लस के तो सारे फीचर्स हैं it has all the features of plus but उसके अलावा you get personal mentors as well ठीक है लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस वीकली रिपोर्ट्स और पेरेंट्स के साथ भी कई मीटिंग्स की जाती है सो दैट दे आर ऑल्सो ऑन द सेम पेज तरीका वही है you first have the category you then have the number of months and then you have the code डालते ही 10% discount and obviously needless to say if you spot something inappropriate on our channels let us know we'll take care of that फॉर्म का लिंक नीचे पड़ा हुआ है ठीक है okay so अब now that we are done with this let's proceed ठीक है with the next option Shravan got this correct that's great Shravan that's improvement The largest assembly of genetic material is most appropriately called थोड़ा सा दिमाग लगाना हड़बड़ी में गड़बड़ी मत करना
लार्जेस्ट असेंबली ऑफ जेनेटिक मटेरियल पूछा गया है. यू हैव अ लॉट ऑफ जेनेटिक मटेरियल का नाम ही यहाँ पे. यू हैव टू जस्ट पिक द लार्जेस्ट असेंबली. ठीक है. डीएनए है, जीन है, क्रोमैटिड है, क्रोमोसोम है, और you're talking about nucleus, right? So you just have to pick the largest assembly. Come on. Absolutely perfect. Guys, that is a chromosome. So DNA, even one gene is DNA, even half gene is DNA, even 10 genes are DNA. But DNA complexes with the proteins called histones, and those are called chromosomes. Chromosomes can have duplicates sometimes called chromatids, but chromatids are still attached to the same point centromere, इसीलिए they are still regarded as one chromosome. इसीलिए largest assembly को हम chromosome कहते हैं. ठीक है. हाँ, टफ कंपटीशन बिटवीन टू ऑफ द स्टूडेंट्स. ठीक है, बाकी लोग भी ऊपर आ जाओ. समवन हैज स्टॉप प्लेइंग होला हु इज दिस गाय. गाइस अटेम्प्ट करो क्विज. देखो इतना छोटा तो क्लास है. हार्डली 30 मिनट की क्लास होगी आज. 8th क्वेश्चन ऑलरेडी पहुंच गया. 11 क्वेश्चन है टोटल. डन. छुट्टी. आई नो नवरात्रि है. द टिश्यू विच इंक्रीजेस द गर्थ इज एप्टली कॉल्ड. जो टिश्यू आपके गर्थ, प्लांट के गर्थ को इंक्रीज करता. गर्थ मींस थिकनेस, है ना. Sorry guys about the snorts and everything. Come on guys. Increases the girth. Very good. Okay, lateral meristem also known as cambium, also known as secondary meristem. Lateral इसलिए बोलते हैं क्योंकि sides पे होता है. Cambium is the name given to the tissue and secondary इसलिए बोलते हैं क्योंकि शुरुआत से plant के पास नहीं होता. They develop this afterwards. ठीक है. And that is a tissue that could be vascular or called cambium, or after they divide and divide and divide and they give rise to the new tissues. ठीक है. चलो. Very good. We have new students joining in. That's great. That's great for tough but let's go to the ninth question. I hope you people are ready. The chief difference between a hemichordate and a protochordate. Now ये confusion वाला points हो जाता है. Hemichordata and protochordata. So remember chordates, four hallmark features. What's a hemi? What's a proto? What's an invertebrate? What's a vertebrate? What's a chordate? What's a non-chordate? What's a protochordate? What's a hemichordate? ये सारी चीजें आपको क्लियर होना चाहिए. Okay, so protochordate, proto means first, chordate that means the first group of organisms to have a true notochord. If the notochord is replaced by vertebral column, you say कि वो vertebrates है. तो chordates could be protochordates or vertebrates. Vertebrates को आप craniata भी बोलते हो, craniates क्योंकि उनके पास cranium भी है. बट हेवी कॉर्डेट पहले लगता था साइंटिस्ट को कि भैया ये इसके पास तो नोटोकॉर्ड है. बाद में पता चला कि वो बक्कल कैविटी से निकल रही एक पतली सी ट्यूब है जिसको गलती से उन्होंने नोटोकॉर्ड समझ लिया था. एंड देन दे वर प्लेस्ड बैक इन नॉन कॉर्डेट्स. सो द चीफ डिफरेंस बिटवीन अ हेमी कॉर्डेट एंड अ प्रोटोकॉर्डेट इज दैट द हेमी कॉर्डेट लैक्स अ नोटोकॉर्ड. हेमी कॉर्डेट के पास नोटोकॉर्ड नहीं है और प्रोटोकॉर्डेट के पास है. ठीक है. Aha, Samyak is gaining the ground, I guess, here. Yes, Shravan and Samyak closely behind each other, and Dragonite and Tom. People are also shortly following. That's great. Stomochord, exactly. Stomochord उसको कहते हैं. बिल्कुल सही बेटा. Adaptive immunity किसको include नहीं करती? Which of the following is not a part of adaptive immunity? Antibodies received from mother, antibodies received in the tetanus shots, vaccines, neutrophils. Which of these is not a part of adaptive immunity? थोड़ा सा अगर ध्यान से आप सॉल्व करोगे इजी. इफ यू रिमेम्बर हमने बोला था कि इम्यूनिटी कुड बी इनेट एंड अडैप्टिव. इनेट मतलब बोले तो जो अपने पास बचपन से. अडैप्टिव कैन बी डेवलप लेटर ऑन इन योर लाइफ. ना हमने अडैप्टिव को भी बोला था दैट इट इज नेचुरल और इट इज आर्टिफिशियल. नेचुरल मत बोले तो योर बॉडी क्रिएटेड इट, राइट. आर्टिफिशियल मतलब कि आपने बाहर से हेल्प ली, आपको बना बनाया इम्यूनिटी मिला.
राइट, सॉरी, नेचुरल आर्टिफिशियल, नेचुरल आपकी बॉडी ने बनाया, आर्टिफिशियल मतलब बाहर से मिला। एक्टिव और पैसिव, एक्टिव आपने बनाया, पैसिव एंटीबॉडीज आपको बने मिले। तो अडेप्टिव इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज रिसीव फ्रॉम मदर इज पैसिव, पैसिव है क्योंकि मदर ने एंटीबॉडीज बना के आपको दिए, तो इट इज अ पैसिव फॉर्म ऑफ अडेप्टिव इम्यूनिटी एंड इट्स नेचुरल। पैसिव है, नेचुरल है क्योंकि वो कहीं बाहर से नहीं आया, राइट। उसको नेचुरल हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो कहीं बाहर से नहीं आया। सॉरी गाइस, मेरा आईपैड इज मिसबिहेविंग फॉर सम रीजन। ओके या, नाउ इट्स कूल। सो ये अडेप्टिव है क्योंकि बाद में डेवलप हुआ, नेचुरल है क्योंकि खुद से आया, पैसिव है क्योंकि आपने एंटीबॉडीज डेवलप नहीं किए, आपको डेवलप्ड की एंटीबॉडीज मिले। Antibodies received in tetanus shots, they are also antibodies prepared already, तो वो भी पैसिव हुआ। बट इट इज आर्टिफिशियल क्योंकि आपको बाहर से लैब में बनाए गए एंटीबॉडीज मिले। वैक्सीन्स आर एक्टिव इम्यूनिटी क्योंकि वैक्सीन्स मोस्टली हैव वीकेंड, डेड और न्यूट्रलाइज्ड पैथोजेंस, आपकी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाती है। सो ऑल ऑफ दीज आर अडैप्टिव इम्यूनिटी, बस नेचुरल आर्टिफिशियल का फर्क है और एक्टिव और पैसिव का फर्क है। न्यूट्रोफिल्स ऑन द अदर हैंड, न्यूट्रोफिल्स आर सेल्स विच आर फैगोसाइट्स, एक तरह का डब्ल्यूबीसी जो नॉन स्पेसिफिक तरीके से पैथोजन को खाता है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई दैट इज एग्जांपल ऑफ, दैट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ अडैप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। ओके, that is correct, Samyak. Neutrophils and macrophages are phagocytic. Great, great, great. So I see there has been a change in leaderboard. Nitrogen fixation makes nitrogen available in soil, makes nitrogen available in plants, makes nitrogen available in air, or none of these. तो आपको multiple options चुनने का option है इसमें. You can choose multiple options if you want that. नाउ गाइज देखो, ये एक बात है दैट नाइट्रोजन फिक्सेशन यूजुअली हैपेंस इन सॉइल, बट आई वांट यू टू रिमाइंड योरसेल्फ, टू रिमाइंड योरसेल्फ ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट्स में जो रूट नोड्यूल्स हैं उसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया लिव्स, उसमें वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को अब्सॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके प्लांट को दे रहा है। So, हमेशा nitrogen fixation does not make it available to the plant directly. It makes it available to the soil और soil से plant absorb करते हैं। But कुछ cases में it also can make it available directly to the plants, है ना। So इसीलिए correct option होगा first और second। आपका first और second, they are the correct options, the remaining are wrong, ठीक है। चलो बेटा, मल्टीपल ऑप्शन था, दो ऑप्शंस आप चूज कर सकते थे। माइटोकॉन्ड्रिया इंपॉर्टेंट, माइटोकॉन्ड्रिया इंपॉर्टेंट क्यों है? इट इज द ओनली ऑर्गेनल टू क्रिएट एटीपी, इट क्रिएट्स एटीपी टू बी यूज्ड फॉर मेटाबॉलिज्म, इट क्रिएट्स एनर्जी, इट अब्सॉर्ब्स एनर्जी। आपके पास चार ऑप्शंस हैं, या फिर चूज ओनली वन। वेरी गुड। सो गाइज, इट इज नॉट द ओनली ऑर्गेनल दैट कैन क्रिएट एटीपी। मैं आपको याद दिला दूं कि एटीपी क्रिएशन साइटोप्लाज्म में भी होता है, और इवन क्लोरोप्लास्ट, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बीच की लिंक होता है एसिमुलेटरी पावर, एंड एसिमुलेटरी पावर इज NADPH एंड ATP। सो इवन क्लोरोप्लास्ट क्रिएट्स एटीपी, और अगर आपको ये नहीं पता तो साइटोप्लाज्म भी क्रिएट करता है एटीपी। So we can't say it is the only organ. It creates ATP to be used for metabolism. That is true. It does not create energy. Energy can neither be created nor be destroyed. आप energy को बना नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते. It does not even absorb energy. वो काम क्लोरोप्लास्ट का है, right? So it just creates ATP जो कि metabolism के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, अच्छा समय, I'll don't worry, कोई ना। श्रेया अब ठीक है बेटा, डोंट वरी, वो ऊपर नीचे होता है, कभी काल इट हैपेंस। चल, I think we are moving towards the last question, शायद। Are we moving towards the last question? No, no, we are moving towards the same. क्या ये last question था?
सर आंसर कहाँ है बेटा? अब तो आपके पास समय नहीं बचा. दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन. So Samyak is a winner. Well done, beta. This is really great, guys. Please make sure you participate into these quizzes. आज छोटा quiz हुआ because I'm not really well, but mostly now that आपका syllabus खत्म हो चुका है, you'll have longer quizzes, right? And you'll have mostly quizzes ही होंगे अब, ठीक है? So मैं आपको एक बार दोबारा प्लान याद दिला दूं बेटा. There is two part NTSC plan. NTSC का दो part plan है. Sorry, NTSC का part है Wednesday और Saturday. IOQJS is Tuesday, Thursday, Friday. And the entire plan is available on the tracker itself. आप वहां से track कर सकते हो. तो make sure आप इसको check out जरूर करो. Now we'll also be using special classes to practice more questions. Special classes are completely free. All you need to do is download the app, use the code SONA05 एंड यू गेट दी एक्सेस. ये स्पेशल क्लासेस की लिस्ट है जो 30 अक्टूबर तक प्लान है. आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस भरे पड़े, यानी कि 19 तारीख ट्यूसडे के बाद से यू हैव प्रैक्टिस स्टार्टिंग, राइट? तो आप अभी स्पेशल क्लासेस को बिल्कुल मिस मत करना बेटा, राइट? सो डाउनलोड करो बिकॉज इट्स मोर रियल टाइम. इट हैज क्वेश्चन टैब्स. आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो. क्विजेस जैसे मेंटी के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है, वहाँ कुछ वेटिंग टाइम कुछ भी नहीं है, राइट? इट्स टोटली रियल टाइम. सो गाइस रिमेंबर, download the app and use the code SONA05 because that gets you 10% off as well, right? So download the app if you haven't already, and if you want to reach me, that is Sona Singh Unacademy or Unacademy NTC Foundation as well, right? Do remember to like, share, and subscribe to the channel and press the bell icon so that you get to have all the notifications. If you have any questions, I'm looking towards the chat box. Oh, Shreya, you were Dragonite. Oh, that's nice. That's nice. सर आईटी प्रिपरेशन कहाँ करें? बेटा अनअकैडमी का आईटी का अलग चैनल है. दिस इज फॉर फाउंडेशन, नॉट आईआईटी जेई नीट, बट आईटी का अनअकैडमी का अलग चैनल है, नीट का अलग चैनल है बेटा, ठीक है? ओके, सो गाइस, हैप्पी दशहरा. टुमारो इज दशहरा. आई विल बी कमिंग लाइव टुमारो once again for a short session where we'll be talking science behind a few of traditions. कुछ traditions के behind थोड़ा थोड़ा science है, right? So we'll try to talk about commonly spelled things in our home, some traditions, fasting and stuff like that, so that अगर कुछ किसी चीजों में साइंस है तो पता तो चले, right? So let's talk about that tomorrow. तब तक के लिए take care, bye, do well, and once again, with a share. Thank you so much, guys. Good night.